Okay, so everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I'm Taimur Mir, that's Tanyar Ahmed, and we are here to discuss the conclusion of the seven match Pakistan versus England series. We had done uh, an episode before, uh, the series started, and now we're going to do a conclusion. We will get back to that, the earlier episode as well, and to some extent the predictions sort of that we had made about that. But before we start, let's start off with our sponsorship message. So this program is brought to you by Catches with Matches, but I'm being told that currently we are out of that stock in Pakistan. So pre-order now, and you should be receiving it next time whenever any unimportant match kind of pops up in the foreseeable future. But again, let's get back to the earlier, before we get there. And in fact, let's just forget that. And let me just mention something on a more personal note that's been a terrible, terrible day for me as a fan, not just Pakistani cricket fan. I also was, as a Manchester United fan to watch your team go 4-0 down in the first half and then to end up with 6-3. एंड वो मेरा होता है कि कई दफ़ा इट हैपेंस अ लॉट लाइक यूनाइटेड और पाकिस्तान का मैच एक दिन के ऊपर होता है एंड कई ओकेजन्स में ऐसा हुआ है कि दोनों बड़े और जब पहला मैच बुरा होता है मुझे डर लगा होता है कि दूसरा मैच भी उतना ही बुरा होने वाला है एंड आई वाज जस्ट काइंड ऑफ होपिंग एंड प्रेइंग कि ऐसा ना हो कि चलें एटलीस्ट एक मैच तो अच्छा हो जाए लेकिन मुझे डर लगा हुआ था कि यार सेम सिचुएशन रिपीट होगी इनके साथ भी उतना ही गंदा होने वाला है एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड so you know one thing that I'm sort of maybe not proud of, but unhappily that did kind of turn out to be true. Which is what I said. Ki, yaar, as the series goes on, Pakistan will start to lose their advantage. Early, if you remember, I said कि early on the series we have a better chance of getting in the lead. लेकिन जितना जितना matches आगे चलते जाएंगे हमारे लिए थोड़ा disadvantage होगा because they will start to get used to our tactics or our conditions. Another thing I had not considered, which actually has become more of an important factor for England, was that over time they actually utilized the series, which is what it should have been used for, was to figure out their combinations. And by the end of the series, they kind of figured out their tactics and their combination. Or Pakistan at this moment, वही बात है कि but वही बात जो हमने कहा था कि this series what it should have been used for was कि by the end of it आपको अंदाजा हो जाए कि कौन से आपके players हैं which should be taken forward into the World Cup और कौन से इनको छोड़ना चाहिए and at the end of the day you're back where you started वही कुछ देर खेल रहा है और क्या नाम है अपना you're still nowhere close to finding the right combination and the right players वही आपके सेम मसले हैं कि जब crucial match आता है उस टाइम पे I mean we are worried about the middle order and all that, and that's still a very valid point. But I think something that we haven't discussed is Pakistan fielding in crucial games. Because I feel like it's become a pattern at this point. जब भी कोई crucial game होती है, we drop an important catch or important catches in some cases, and players who statistically are actually good fielders. Shadab is statistically a very good fielder. Even Babar is a very good fielder. Like if you consider the number of catches that he takes. And even overall, Pakistan's fielding stats are not bad at all. Like I remember there was some stat about that. Pakistan actually has a pretty high catching rate. They don't drop many, but they always seem to drop it in important games. So there's something there. There's like a mental fragility or whatever that is that comes in that sort of kicks in. But I mean, even with that, I think that's something to look into. But वो बात है कि suppose wicket ले भी लेते और या इस तरह की situation होती भी, but there are other problems as well. It's not just one issue. I think the only thing the series has done so far is to expose the problems of the Pakistani team even more. And बहरहाल मैं कह रहा था कि अभी मैच की सिचुएशन तो मतलब वो तो जब 10 रन पर ओवर भी रह गए तो भी सॉरी या मे बी 12 रन पर ओवर पे भी आ गया तो मैं अंदाजा हो गया था कि अब कुछ होने नहीं वाला बट या आई मीन we are here not just to discuss the last game. To be honest, it is going to be about the entire series. But of course, since कोई बात है कि जख्म अभी जो है वो थोड़े fresh हैं, तो we're going to talk about the last match first. But उसमें obviously, to be fair, it's a close series. Pakistan is losing 4-3, so obviously ज़्यादा close हो नहीं सकता था. Before the series I started, I thought that Pakistan might win 4-3 or maybe हो सकता है कि
5-2 जीत जाएं, something like that. मेरे mind में इस तरह से था. But I thought it would be a close series for sure. But I thought Pakistan would come out on top, and Pakistan came quite close to it as well. लेकिन आखिरी 2 matches में they just completely got exposed. I think वही मसला है कि वो जो tactical maybe आप कह सकते हैं weakness है पाकिस्तान टीम की, kind of got exposed. Unfortunately, they were also without, their bowling lineup भी थोड़ा कमजोर हुआ था पाकिस्तान का, which is their main strength. The 2 of your top bowlers are out. But again, I think the bowling did a decent job. I think they would have done well अगर आज catches वगैरह पकड़ लेते पाकिस्तानी fielders भी, तो they would have done a slightly better job as well. But I think it's just क्या उसे कह सकते हैं, overall a disappointing series in the sense कि जो main मकसद इसका था, अगर हार भी जाते, but if we had kind of figured out कि चलें, this is the combination that we're going forward with. These are the players, that we rely on. These are the roles that we will have. But I feel like at the end of it, I'm still kind of lost as to what the Pakistani combination is. So, I mean, losing perhaps is not the worst thing in this situation. But for me, the bigger loss is that we still are kind of lost in terms of कि अच्छा हाँ हमें पता नहीं है हमारी टीम कौन सी है. We still have no idea. Yeah, so I think one disadvantage of recording a podcast immediately after the match is कि I'm red hot and मुझे गालियों के सिवा ना और कुछ देने का दिल नहीं कर रहा. Because I think like सबसे ज़्यादा गाली किसको देने का दिल कर रहा है इस वक्त? Pushdil, 100%, and I'm sorry, I feel bad for the guy. I 100% feel bad for the guy, considering the fact that जो crowds को जिस तरह boo कर रहा था. लेकिन फिर भी, there's a high chance कि ये बंदा पर्ची है. There's no denying that because जिस level की backing उसको मिल रही है, it's unreal. Considering भाई 100 के strike rate पे खेल, how is he playing in any international team, let alone Pakistan? ये तो श्रीलंका में भी select ना. मतलब in a T20. And he's supposed to be like the hitter, or at least Asif चले नहीं चलता, लेकिन Asif का strike rate is around like 150 or something, right? Yeah. So even if he doesn't make runs, but at least he's kind of justifying his position, sort of. Yeah. तो वो तो फिर भी आप कह सकते हैं, लेकिन Qudrat has consistently been batting at 100 strike rate for the last maybe, I don't know, 12 games, perhaps 10 to 12 games. Yeah. No, his actual strike rate at one point was 100. So that's my problem first and foremost is Qudrat Shah. It's annoying by this point, and वो एक hyper fixation है कि नहीं हम इसको एक खास जगह पे middle order पे भेजना है जो crucial जगह है काफी. अगर आप इसको lower down the order भेजें तो I wouldn't even mind. And I think there comes a point of like absolute bonkers mentality of like selection where Amir Jamal को क्यों नहीं खिलाया इस मैच में? And more importantly, why is Amir Jamal being played as a bowler when he's not really a bowler? He's a batting all-rounder. No. And like जब जो 2 मैचेस खिलाए थे उन्होंने उसको भेजा था I think 90 नंबर पे. Yeah, 90 नंबर पे भेजा था. Yeah. The guy has a strike rate of around like 150 almost. The highest strike rate of anyone in the team. So why isn't he going up higher? टीम की प्रायोरिटीज हैं कि नहीं हमें आसिफ को जाना हमें आसिफ को भेजना है. और या क्या नाम है तो नवाज को क्यों पर नहीं भेजते? नवाज ने वही बात है कि एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद उसको कभी आपने ऊपर भेजा ही नहीं है. शादाब goes up to like number 3 for Islamabad United. He's like a proper batsman and he I think पिछले PSL में almost 200 के strike rate से वो बैटिंग कर रहा था. So he's capable of that as well. हर दफा वही उठा के आपने खुशदिल को क्यों भेजना है? खुशदिल की कोई इस वक्त टीम में जगह नहीं है. इवन मतलब उसको तो निकाल बाहर करें आप. यू डोंट इवन, या कोई बात है कि आमिर जमाल को या ऐसे किसी और बंदे को रखे. जस्ट गेट समवन एल्स इन देयर, आइदर गेट एन एक्स्ट्रा बॉलर और समथिंग, कुछ करें. मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आई स्टिल फील लाइक शादाब एंड नवाज कैन कैरी देयर वेट विद देयर बैटिंग एज वेल. दे आर गुड इनफ टू दैट. You do not need खुशदिल. और फिर खुशदिल को आप उसी पोजीशन पे क्यों भेजना है हर दफा? एक बंदा 100 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली बैट कर रहा है फॉर द लास्ट 12 गेम्स. He has not improved. maybe उससे भी पीछे की बात हो. These are just the games that I can remember. I don't even know at this point उसका career strike rate क्या है T20 में. Probably 100, 106, 110 के आसपास ही होगा, सुपर नहीं होने वाला, which is not good enough
for someone who is coming in at that crucial a role जहाँ पे उसने आके immediately hitting करनी है. ना वो बंदा spinners को मार सकता है, ना वो बंदा fast bowlers को मार सकता है. I don't see the point of him. Iftikhar has at least picked up his game. अगर आपने कहना है कि चाहिए extra spinner आपको चाहिए तो Iftikhar is doing that and he's actually doing a really good job as a He's spinner. also batting well. हाँ I'm not in the camp कि like हाँ and Iftikhar is Iftikhar actually को bowling हाँ batting well. actually He's doing batting his well. job. हाँ मतलब वो मसला ये है कि वही बात है कि we used to have a really solid pair in Hafiz and Shoaib, like whatever else might be said about him, but they were a very solid pair who could hit spinners and fast bowlers, and they also added some depth to your bowling lineup as well. मसला ये है कि Iftikhar and Khushtil are like really inferior replacements for those two. Even Iftikhar Yeah. is still somewhat competitive, but again, वही बात है कि he even at his best has not matched either Shoaib or Hafiz or what they were adding to the game. But I mean, his replacement, he could still be considered somewhat because in the absence of better options, I guess, Iftikhar can still be considered. But I mean, खुशदिल का तो यार बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. लाइक लोगों ने लिटरली कहा हुआ कि at this point I might as well believe them कि यार he has some dirt on either the PCB or Babar or someone, कि कोई ब्लैकमेल Yeah. बटी उसके पास भी कोई लीक्स जो हैं उससे रखे हुए हैं जो हर तरह के आज के दूसरे लीक्स आ रहे होते हैं तो कुछ पता Oh, नहीं कोई maybe he's the cipher. Like, सारी Shehbaz Sharif के भी will. सारी चीजें हाँ लेके ये बैठा हुआ है. That would make sense, you know. At least it would make some sense, you know. बाकी अभी फिलहाल तो कोई तुक भी नहीं बन रही ना कि क्यों वो टीम में बार बार आई जा रहा है. आमिर जमाल एक मैच में आया, इस मैच में था भी नहीं. He wasn't in this game, right? I don't think he was in this game. Yeah. He wasn't in this game. No, that's my point. Like, it doesn't make sense for him not to be in the team because, like, वो बात है, this इतना is अच्छा the उसने एक तो seventh game है. This is yeah. the game where you're supposed to bring in all the players जो आपको लग रहा है कि अच्छा हाँ ये हमारी टीम combination है. And so unless he is sick, Yeah. और you've consistently seen Khushtil has not performed. Khushtil को फिर से दोबारा लाने में वो भी final crucial game में क्या मकसद था आपका? Honestly, it just baffles my mind. बाकियों को नीचे से ऊपर आपने क्यों नहीं भेजा? You could have easily replaced Khushtil with either Nawaz or Shadab going up the order. You could have put Amir Jamal in there to have an additional striker. चलें, it's just, I mean, बाकी ठीक है. I can comment on the fielding being terrible and maybe because of that they might have made like maybe 20, they would have been 20 runs short. Maybe हो सकता है कि 180 का टारगेट होता. सही है. तो हो सकता है कि पाकिस्तान उसको चेस करे था, बट अगेन एट दिस पॉइंट पाकिस्तान इज लुकिंग लाइक अ वेरी वेरी टॉप हैवी टीम जिसको वाकई पता नहीं है कि हमारे नंबर 1 और 2 के बाद किसने आना है. बिकॉज वो बात है कि एक टाइम पे एटलीस्ट हमारे साथ जो है वो फखर परफॉर्म कर रहा था. सो वी हैड अ स्ट्रॉन्ग टॉप 3. अभी तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टॉप 2 है जिसमें से बाबर हैज आल्सो बीन अ बिट आउट ऑफ फॉर्म. Even though technically his record in this series hasn't been that bad, it's been pretty decent, but overall he's not in his best form either. So you've got Rizwan, you've got a slightly out of form Babar, and then you've got nothing. Because obviously, Shan Masood has not managed to perform either. He hasn't been that bad. I think utni buri form uski nahi thi jitni Fakhar ki chal rahi thi. But at the same time, he hasn't been consistent enough. Like when we talked about it earlier, हमने कहा था कि the only way Shan Masood actually makes his place in the team is if he consistently gets some runs. और consistently उसने runs नहीं बनाए because we know he does not have the gears of Fakhar. Fakhar में ability थी कि he could turn it on and then he could suddenly hit a lot of sixes and fours and make a lot of runs very quickly, but Shan does not have that. So Shan के पास वाहिद saving grace यही था कि वो अगर आएगा तो वो consistently runs perform करेगा तो फिर अपनी टीम में जगह बनाएगा. So again he hasn't made his place in the side either. Fakhar is out as well, so Fakhar की जगह भी नहीं बनने वाली. Then you've got No, actually, I feel कि अगर एक mentality रखनी है कि हमें players को back करना है, I try to mimic Babar's accent for a bit, but like players को back करना है, हमें वो mentality रखनी है, तो let's do that to Fakhar, ठीक है? क्योंकि कम से कम Fakhar 10 में से एक इनिंग उसकी ऐसी होगी जो आप बोलोगे कि भाई this was phenomenal, this was match winning, और वो single handedly मैच जिता देगा. At least we know Fakhar has that capability. खुशदिल का तो वो capability भी नहीं है ना. So like, what are we investing in? I think if we are to like invest in players, at least we know Fakhar में potential है, ठीक है? अभी वो out of form है, but अगर आप उसको confidence दोगे तो we can actually have results through that.
with Khushdil, we don't even know उसमें potential है भी है नहीं. I mean, हाँ. yes, the only potential that we know is his PSL record, which isn't translating international. I don't think he should be on the team. I don't think, and it's also like so like this is a sort of like thing that you use जो इंग्लैंड के टेस्ट के जो क्या कहते हैं फैंस है ना वो ये हम्म, बात क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं for some of their players who are not performing on a consistent basis. I think हम्म, कौन सा जो नया ओपनर but like they're saying it's not like एक तो the player is at fault because they can control their performances, okay, and we can bash them for that, right? But at the same time, you kind of feel bad for the player because the management keeps pushing them along. So they're clearly going through a very dark phase in their life, and the हम्म, management is consistently beating a dead horse. And that's unfair on the player that's not performing because I think your fair chance, even for Khushdil, is that he should be dropped because बिल्कुल. he that spot. So again, लेकिन ये जो आई थिंक मसला वो मैं कह रहा हूँ कि another problem putting him also consistently in a spotlight, यार एक मसला ये भी आ रहा है ना खुश दिल को अगर आप yeah, निकालें तो फिर आपने किसको डालना है because you haven't really come up with any other option so far. The only person you've tried is Amir Jamar, who's not really a replacement for Khushtil. We haven't really tried any players जो कि उसकी जगह पे आ सकें या परफॉर्म कर सकें. हमने कोई खास उस तरह से किसी को ट्राई आउट नहीं किया. एंड दैट्स अबाउट इट. वो बात है ना कि अब आपने कोई ऐसा कोशिश भी नहीं की उसको रिप्लेस करने की. मे बी चेंजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, गेटिंग अ न्यू प्लेयर इन. दीज आर योर टू ओनली टू ऑप्शंस. और आपने उनमें से किसी एक चीज़ को ट्राई नहीं किया और एंड पे वही 7 मैचेस के आखिर में फिर खुशदिल जो है खेल रहा है. ही इज प्लेइंग एग्जैक्टली द वे दैट ही इज बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. नथिंग इज रियली yeah. चेंज्ड. सो वही बात है कि फायदा मुझे समझ नहीं आ रहा. फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट लॉस. वो मैं कह रहा था फॉर मी द बिगेस्ट लॉस इज एट द एंड ऑफ द सीरीज वी आर मोर एट सी देन वी वर एट द स्टार्ट ऑफ इट. कि जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत लग रहा था कि चलें हमारा ये कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ चल रही है. I think the only thing we have a bit of confidence about at the end of it is our batting, is our bowling. But इस टाइम पे ना हमारी फील्डिंग पे हमें कोई इतना कॉन्फिडेंस है, स्पेशली इन लाइक बिगर गेम्स. मुझे ये लगता है कि इट्स बिकम लाइक अ पैटर्न कि हम बड़े मैचेस में हमारी फील्डिंग एकदम शिट हो जाती है. चाहे उससे पहले हम बिल्कुल ठीक कर रहे हो. वी एक्चुअली ओवरऑल डू वेल बट इन बिग मैचेस वो बिल्कुल फ्लॉप कर जाती है. एंड क्या कह सकते हैं, बैट जो है इज वी हैव नो आइडिया. वही सेम जोक के जी आफ्टर क्या कहते हैं बाबर और रिजवान, जाल अहमद जाल अहमद जाल अहमद आपकी पूरी बैटिंग लाइन में चल रही होती है. बिकॉज ऑनेस्टली आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसके बाद किसने आना है और किसने परफॉर्म करना है. देयर इज लिटरली नो वन देयर. द ओनली पीपल आई हैव सम कॉन्फिडेंस आर द ऑलराउंडर्स. कि नवाज और शादाब का मुझे पता है कि दे विल डू अ जॉब. ऊपर भी मुझे पता है कि रिजवान और बाबर हैं, दे विल डू अ जॉब. बट उसके बाद से ना नंबर 3 पे, ना नंबर 4 पे, ना नंबर 5 पे, दैट्स लाइक 3 बैट्समैन जो आपकी बैटिंग की कोर हैं. उनमें मुझे किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है. आई डोंट नो हु विल कम इन एंड आई डोंट नो हु विल परफॉर्म. तो वही बात है कि and honestly who will come there. Heather has been terrible. Shan has been okay-ish at best. और उसके अलावा इफ्तिखार हैज़ बीन बेटर. But again, Iftikhar, मैं कहूँगा compared to Shoaib Malik and Hafiz is nowhere near as good. Despite being, being performing, वही बात है कि it's sort of graded on a curve compared to the others. He's doing better, but the others are just terrible. इस टाइम पे कोई perform नहीं कर रहा है. कुछ दिल वही बात है कि the less said the better at this point because we've talked so much about him. तो वही बात है कि at this point बैटिंग लाइनअप में और वही बात है मिडिल ऑर्डर, सो 3 4 5 पे आपके पास लिटरली इस टाइम पे आपको अंदाजा नहीं कि कौन आएगा परफॉर्म करेगा. इट्स जस्ट that is a huge problem and there's no way and it's too many holes to fill at this point. I mean we can be a bit generous and say चलें ठीक है, you basically have 2 holes to fill. इफ्तिखार को छोड़ दे, suppose he's doing okay and he is basically just doing okay. उससे बेहतर वो नहीं कर रहा. But suppose बाकी 2 पोजीशन का फिर आप क्या करेंगे. नंबर 3 की जो क्रूशियल आपकी पोजीशन है उस पर अभी आपको कोई आइडिया नहीं है. और उसके बाद नंबर 4 या नंबर 5 पोजीशन डिपेंडिंग ऑन किसको आप ऊपर भेजते हैं उसके लिए इफ्तिखार में से यू स्टिल हैव नो क्लू कि क्या करेंगे आप. सो बेसिकली दीज 2 रियली क्रूशियल पोजीशंस एट दिस पॉइंट आर जस्ट कंप्लीटली अप इन द एयर. और वर्ल्ड कप सर पे है तो आप क्या करेंगे. आई मीन एट दिस पॉइंट वो बात है कि ओनली वे वी कैन काइंड ऑफ होप
कि कुछ Yeah, होगा, yeah. because our bowlers come back and they just basically save our ass like they always do. क्योंकि बैटिंग में मिरेकल तो कोई भी नहीं होने वाला. It's not like suddenly Fakhar is going to come back into form and start performing. So वही बात है कि अभी आप काफी बुरे फंसे हुए हैं, और टैक्टिकली भी आई थिंक टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि this was an interesting series because you had like these two opposing tactical sort of side, kind of battles, because Pakistan team kind of playing in a way where they were putting a very high value on wickets and trying to bat slowly, and then kind of building up over time, and the England team just going for broke, every single person coming in just trying to Point bat. Shirali, I was holding on to this. I was like, मैं end में बोलूंगा, but this is the exact point I had. Telling if Like, I started that, then you can carry that point forward. yeah. नहीं, it was. I think मैं यही सोच रहा था कल से कि it was very warm up game excellent because it was like two distinct and completely opposite philosophies for both batting and bowling. That sort of like went head to head. So like batting, mein, there's one side that's like हमें हर बॉल पे अटैक करना है, and the other side is more about कि हमें consolidate करनी है innings को और फिर end में जाके मारना है. So वो एक mentality थी, and then bowling में England is more batting for that. जो I think जो क्या कहते हैं, and I think let's be very fair on the series because this was a 4-3 series, which means that बहुत कांटे का मुकाबला हुआ है. Uh, the the दोनों की strategies expose हुई हैं. So if you look at the matches that England lost, they lost because of that hyper fixation on attacking. जो खास तौर पे जो 2-3 रन से जीते ना 2 मैचेस, उसमें अगर मोइन अली सिंगल ले लेता, उसके अंदर वो एक मेंटालिटी नहीं होती कि नहीं, I'll just smash everything away. He could have won that match. Very. But नहीं, वो एक I wouldn't say arrogance, but वो एक strategy है टीम की कि हमें अटैक करके ही जीतना है. तो वो उस पे चूंकि वो हाइपर फिक्सेटेड. देन सेकेंडली वो जो हारिस रफ वाला मैच था, वो अगर किसी तरीके से हारिस रफ को ओवर निकाल लेते, वही वही जो बैट्समैन था, अगर वो ही वुड हैव स्टॉप्ड अटैकिंग, ही वुड हैव मोहम्मद वसीम को ओवर था, बहुत आराम से मैच जीत जाता. बट अगेन वही उनकी जो क्या कहते हैं जो मेंटालिटी है वो भी काफी हद तक एक्सपोज हुई है. Obviously they were the ones that were the quickest to overcome their mistakes. We are still struggling with it. But in that sense, I think it was a very good practice series. Like the practice series का जो मकसद होता है ना, वो उसने निभा लिया. Like this was a good way for showing both teams that are prepping for the World Cup कि क्या हमारे like flaws हैं and हम उसको किस तरह overcome कर सकते हैं. And the only reason England came out on top was they figured our bullshit out. They saw through our bullshit, and so that's the only reason that they like won. Exactly. I think वही बात है कि मैं वही, and this is what I said at the start of the podcast as well, कि हमारा ज़्यादा बड़ा जो मुझे दुख है वो सीरीज हारने का नहीं है, क्योंकि मैंने सीरीज से पहले ये कहा था कि मेन मकसद इसका ये है कि हमें सीरीज के एंड तक पता चले कि हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा. That was the main focus of the series. At least that should have been the main focus of the series. और ऐसे अभी हम बताया कि England has actually managed to achieve that goal. And जिस मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि we are more at sea by the end of the series, not less so. क्योंकि अब हमें हमारी इस टाइम पे ज़्यादा confusion बढ़ी हुई है. हमें कोई I don't think we've really learned anything by the end of the series. We've just learned about कि अच्छा हाँ ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, ये भी चलता, and we've जो patently refused to learn from those mistakes. आला खुश थे. Our conclusion from the series is nihilism. Well, at least from a Pakistani perspective, like वही बात है कि क्या वो एक सिसिफियन किस्म की टास्क है कि बस ठीक है आपने जो है वो बस करते रहे एंड पे मतलब जो जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे आप दोबारा आके खत्म हो गए, और somehow we actually gone even worse. हम वो बोल्डर को रोल करते करते ऊपर गए थे, and we started at a even क्या कह सकते हैं position that's further back from where we initially were at the start of the series. जहाँ पे कुछ चीज़ों में तो फिर भी हमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब उन पे भी हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहा. So I think वही मसला है कि that for me is the bigger loss. Yes, मैच काफी गंदा गुजरा, बुरे तरीके से पाकिस्तान ये मैच हारा, सीरीज हार गया,
कोई मतलब आखिरी मैच में फाइट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ. यस, ऑल ऑफ दैट इज शिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज बैड, बट व्हाट्स वर्स इज कि इस सीरीज के एंड पे हमें वी आर even less equipped to know where our combinations are and what our tactics should be. And that is the biggest loss for me. It's not कि हम 3-4 series हार गए हैं. Yes, it was a close series. Obviously, उस sense में हम ये कह सकते. And it was an interesting clash of philosophies. There were some good matches in between, some really good matches in between, but not enough perhaps. There were some really good innings. But again, मसला वही था कि all the really good innings just were just basically just Babar and Rizwan and nobody else. Like literally no one else came to the party. Batting में 7 matches बाद भी किसी और पाकिस्तानी बैट्समैन ने कुछ भी नहीं किया. Literally there was nothing there. आपने मतलब वही बात है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी, नवाज को तो हमने बैटिंग की अपॉर्चुनिटी ही वो खास इतनी नहीं दी. He should have probably be brought up. Shadab should be brought up as well. In fact, you do have a middle order solution. Just send Shadab there. Shadab bats in the middle order for Islamabad and he does it quite well. And I think he can do it at the international level. He has the mentality for it. So I think that's one combination. By some miracle, Fakhr dobara chal jaye to shayad aapke liye, you might have a middle order once again. But or Amir Jamal ko le aaye just to have another player in there who can actually hit the ball. But again, Amir Jamal has not been. अगली न्यूजीलैंड की सीरीज में उसको ट्राई करके देख लें. Let's see if he can bat. वही बात है कि ट्रांसलेट कर पाएगा कि नहीं, because obviously we've seen कि वो मसला होता है. कुछ देर has an excellent record in the PSL. He could not translate it into national cricket. I think that's been proven at this point. तो अभी हो सकता है आमिर जमाल का चेक करना पड़ेगा कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता. बट वो बात है कि एटलीस्ट डिजर्व्स अ चांस. आगे आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है. Go there, see if he works. Send Shadab up the order. See if he can perform consistently for you as well on those kinds of pitches. जहाँ बॉल थोड़ी बल्ले के ऊपर जल्दी आती है. न्यूजीलैंड में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होगा. सो आई थिंक शादाब हैज प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, राइट? बिग बैश में खेला हुआ है ना उसने. Yeah, Shadab. I So think it's so. experience, so he has some experience there as well. So I mean वो बात है कि they need to figure this out quickly. आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में इस टाइम पे आप किस बंदे को ढूंढेंगे, आप क्या उसको लेके आएंगे? किसका नाम ले रहे थे? कामरान गुलाम आई थिंक नाम लिया जा रहा था. Someone was mentioning on the group. वही बात है कि I don't know at this point there aren't that many. मोहम्मद हारिस था और कौन था लड़का जिसकी बात को कह रहा था. But yeah, there's just not too many यार वो players. जो 2-3 लड़के जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया ना, साइम करके कुछ नाम है उसका, साइम हाँ, अयूब. Simon साइम Ayub. अयूब. हाँ, Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. There was also the guy who's अच्छे like a mystery spinner as well, जिसको भी उन्होंने रखा था, जिसको मैच कोई भी नहीं खिलाया. But again इस टाइम में बॉलर्स का इतना मसला है भी नहीं. इस वक्त ज़्यादा बड़ा मसला आपका है. And again आपने and maybe it's like a stop gap thing जो मेरे माइंड में भी आ गई कि नवाज से आप ओपनिंग करवा रहे हैं. You basically give him the इमाद वसीम रोल. And at this point even अगर आपने उसको इमाद वसीम रोल ही देना है तो फिर इमाद वसीम को ही खिला लें. He's actually much better at that. और actually परफॉर्म भी कर रहा है CPL. या आप वो बोल के आसमा खान को लेके आए यार. वो CPL में उसने 50 मारी है. आप क्या नाम है अपना वो नहीं उसको लाएंगे वो. क्यों नहीं ला रहे? I don't think तो his नॉट side अबाउट is ever आसमा. playing. I don't think someone his side is ever playing like international cricket. Not because of like अभी तो बड़ा मजे का था ना. but फाइनल में वो दोनों खड़े होते थे. एक तरफ रकीम कॉर्नवॉल खड़ा होता है, एक तरफ आजम खान खड़ा हुआ था. तो मतलब फुल yeah, चंकी बॉयज टीम था दोनों. yeah, बिग बॉयज जो है ना उन्होंने मैच जिता दिया उनको. और रकीम कॉर्नवॉल तो बहुत अच्छा खेल रहा था उस टाइम पे. लाइक ही वाज yeah. प्लेइंग एंड ही वाज बेटर इनिंग्स. लाइक 80 समथिंग स्कोर किया था फाइनल में. तो तब आजम खान को भी मेरे ख्याल में चांस होना चाहिए. बट आई डोंट नो कि उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे. नहीं तो एट दिस पॉइंट लेकिन वो बात है कि अगेन आपके पास जो हिटर्स हैं, मतलब से शर्जील है फॉर एग्जांपल. शर्जील को कोई नहीं लाने वाला है. शर्जील को सर्टनली कोई नंबर 3 या नंबर 4 पे तो नहीं लाने वाला. इवन इफ दे डू समहाउ डिसाइड कि चलो ठीक है यार, वी लुक पास्ट द मैच फिक्सिंग एंड वी विल ब्रिंग यू बैक. लेकिन वही बात है कि उसका certainly down the order से कोई भी नहीं भेजेगा. तो at this point I don't know. That seems to be the solution. either आजम खान को ले आए, शादाब को ऊपर भेज दें, आमिर जमाल को ले आए, कुछ कुछ करें. मतलब they have to switch things around and they need to have a more flexible batting lineup. Again जब एक बहुत बड़ा मसला में था कि यार आपने अपने बैटिंग लाइनअप को क्यों आगे पीछे कर दिया. जैसे अगर आप एशिया कप में आपने ट्राई किया था उस चीज़ को
तो यहाँ पे भी ट्राई करते. It seemed like a good tactic honestly. And then suddenly they stopped using it altogether. बिल्कुल उसको छोड़ दिया उन्होंने, बैंडेड उसको कर दिया. So वो मुझे समझ नहीं आता कि सीरीज में पाकिस्तान ने इसको यूटिलाइज क्यों नहीं किया. Maybe there was a strategy behind it, but you know क्या कह सकते हैं. But yeah, that's pretty One last much thing all on I that. have at least. हाँ बताएं. Yeah. One last thing. So I don't think so people sort of overbloat like Suklan Mushtaq as a bad coach, and obviously जब वो जिस तरह की बातें करता है कुदरत का निज़ाम and all of that stuff, it's hard to defend them. But I don't think he's a bad he's a bad coach. I think he's a good coach, and I think he has that sort of like aura of like bringing the best out of players. Say this mentality कि कभी भी ये जो conversation जो अभी हम कर रहे हैं ना, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्यों फिर से उस मिडिल ऑर्डर को खिला दिया जो चल नहीं रहा. You wouldn't find any Indian fan at that time making that sort of complaint because they were that team management was extremely क्या कहते हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रखे हुए थे कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, if you can't meet them for even 5 matches you're out. That's how it should be. Constant no problem. Like वो जो horses for courses वाली mentality है, we need that back because ये जो अभी the T20 scene is extremely competitive. It should be as simple as not performing, you're gone. And that worked so well for the Virat Kohli and like Ravi Shastri क्या कहते हैं era because it was just like there was that अगर middle order नहीं चल रहा combination फौरन चेंज हो जाएगा. So like that the fans had trust in the regime कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही they will effectively resolve it. अभी वो चीज हमारे अंदर नहीं दिख रही because अभी हम constantly सोच रहे हैं कि we're trying hard to sort of think that the management is not stupid because our first instinct is to say that the management is stupid, but we don't want to say that, and we're trying to find any rationale for playing Khushdil when there isn't any. And वही बात है कि like we like क्या कहते हैं it's वो एक nihilism वहीं से आ जाता है ना कि like मतलब हाँ समझ लिटरली नहीं आ रहा क्या हो रहा है. मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी सिचुएशन इस हद तक आ गई एंड अगेन वी आर नॉट डिफेंडिंग इट कि आपका क्राउड चीयर कर रहा है एट सीइंग यू गेट आउट, कि जिस निको के ऊपर आपका स्पाइक आता है और क्राउड बकायदा चीयर कर रहा है एंड इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द क्राउड, इट्स द एंटायर क्राउड. सारा का सारा क्राउड जो है वो एकदम चीयर करना शुरू करता है. यस दे शुड नॉट डू दैट और ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छी चीज नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो बात है कि माशरे ने हमें ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया वाली सूरत हाल कि मतलब व्हाई यू नो इज दैट गाय स्टिल इन द टीम, राइट. सो वो बात है कि अब लोग रिएक्ट तो करेंगे. मे बी चांद मसूद का थोड़ा सा एक अनफेयर है, आई फील लाइक उसको जो लोगों ने पर्ची पर्ची कहना शुरू कर दिया है, पर खुशदिल का तो चले फिर भी जस्टिफाइड इन सम वेज है कि इफ द क्राउड इज अगेंस्ट हिम एट द वेरी लीस्ट, चाहे एटलीस्ट उस सिचुएशन में नहीं करना चाहिए था, बट I can understand why because the guy has not consistently performed for a while now, and yet he keeps coming back into the team. And वही बात है कि सबसे crucial match जो आपका literally फाइनल मैच था उसमें फिर आप उसको दोबारा लेके आ गए. Like what the hell is going on? Like उस टाइम पे तो आप कहते हैं ना ठीक है जो हमारे सबसे trusted players हैं वो आएंगे. Why is he a trusted player? So वही मैं कह रहा हूँ ना, तो सेंस नहीं बन रही, उसको आप कहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं? What has he done to earn that trust? वही बात है. Imagine Khushdil is a trusted player. Suddenly Khushdil emerges from behind me with like some leak tapes of me और मैं भी एकदम एडिट होता है सीन और उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं खुशदिल से बेहतरीन प्लेयर तो कोई भी नहीं है यार, सॉरी. क्या अच्छा प्लेयर खेलता है यार, 100 का स्ट्राइक रेट यार, मतलब क्या बेहतरीन है. मतलब आप देखें जावेद मियांदाद का 66 का स्ट्राइक रेट था यार, खुशदिल का 100 का है. सो ही इज लाइक एटलीस्ट 40% बेटर देन जावेद मियांदाद. तो अब वही बात है. I mean that's the only justification that I can imagine at I this think my point. favorite Khushdil meme. क्या? Yeah, I think my favorite Khushdil meme was the one वो जो विराट कोहली का जो 2 रन दिखाए थे और खुशदिल के 3 दिखाए थे. End of discussion वाली. डिस्कशन. वो बात है कि हाँ इस तरह से अब तो वो बात है, अब बात it's come down to this. Essentially we just can't sort of figure out, वही बात है mentally अभी समझ नहीं आ रहा है fans के how do we justify this. It makes no sense. वो नहीं था उसमें Zoolander में सीन था, if you've seen that movie, जिसमें मुगाटू कह रहा था I feel हाँ उसमें सीन होता है कि I feel like I'm taking crazy pills
वो इस टाइम को बात कर रहा होता है, like basically it's he's talking about Derek Zoolander. Derek Zoolander का ये जोक था ना कि he just has one look. He's a model who essentially the same look और उसके कुछ 10 नाम रखे हुए हैं same look के. तो एंड भी क्या होता है कि यार वो the same look, it feels like I'm taking crazy pills. Why does everyone think those are different looks or something? तो मेरा भी वही सीन है कि यार you feel like you're taking crazy pills at this point. कि why is he in the team? सेंस नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा. हम अपने तौर पे जस्टिफिकेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कि ब्लैकमेल कर रहा है, क्या कर रहा है. किस तरह से हो सकता है कि एक बंदा अच्छा कंसिस्टेंटली सलमान बट ने ना लाइक इनडायरेक्टली थोड़ा सा ना बोला था कि पर्ची है. ही वाज सेइंग एंड देन ही वाज आस्किंग लाइक मॉडर्न टीम में पर्ची है कोई, तो ही वाज लाइक आप खुद ही स्टैट्स निकाल के देख लें. आई थिंक जो स्टैट्स सबसे खराब है उसी की हैं. हाँ तो आई थिंक ही मेरी इज स्ट्रांगली अबाउट लोडेड टू द. हाँ मतलब उससे, क्योंकि उस सेंस में शान मसूद के स्टैट फिर भी थोड़े बेहतर हैं, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, even though या he's not performing well and certainly not for the role that he's been given. लेकिन बहरहाल you know I mean I don't know yeah, at this point क्या कह सकते हैं. बहरहाल I just conclude the podcast for now, and we'll catch you again soon. जब भी हमारी अगली सीरीज होती है शुरू, and of course we'll be doing our non-react videos as well in between. So look forward to that as well. So anyway, I'll see you soon.